Good morning, children. बस ज़्यादा. Good morning, children. We are doing social studies, class 7, lesson 2 of part first history. That is rise of new kingdoms. See on page number 19. All of you look in your book. See on page number 19. We are here. The Cholas. The Cholas means Cholo ka shashan. The Chola dynasty was a strong empire in South India between 800 and 1200 CE. The rulers of the dynasty were also known as the imperial Cholas because of the powerful empire which they established in South India. इन्होंने पावरफुल एम्पायर स्थापित की थी साउथ इंडिया में. They ruled in South India for nearly 4 centuries. 4 centuries तक उन्होंने साउथ इंडिया में रूल किया. Their capital was Tanjore, now called Tanjavir. Vijayalaya founded the Chola dynasty. He built the town of Tanjore, a beautiful city of temples. Tanjore क्या है? Beautiful city है temples की. बहुत सारे temples है यहाँ पर. He also built a temple of goddess Nishumbhasudini. See on page number 20. Raj Raja Chola. The greatest Chola king was Raj Raja Chola. He was a brilliant commander. He was also called Raj Raja first. He inherited a small kingdom, but within a few years, it developed into a big empire. उन्होंने छोटा सा ही किंगडम स्थापित किया था शुरू में, लेकिन वो जाते जाते पावरफुल राजा होने की वजह से एक बहुत बड़ा एम्पायर हो गया. विथ एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी एंड नेवी भी थी और आर्मी भी इनकी ऑर्गेनाइज्ड थी, संगठित थी, सुसंगठित थी कि किस तरह से इसको करना है. द किंगडम वाज गिफ्टेड विद रिच रिसोर्सेज. और किंगडम में बहुत सारे रिसोर्सेज थे जो उस किंगडम को शक्तिशाली वैभवशाली बनाते थे. ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर दैट ही वाज. He transformed and reorganized the administration of the empire. To control the trade with the Arabs on the western coast, Rajaraja defeated the Cheras at Tiruvananthapuram. He controlled the Malabar coast by defeating the Pandyas of Madurai. He also controlled the Cholamandalam coast. Rajaraja first released the need for a strong navy and therefore built a strong one. His navy was the best in the region at that time. उसकी नेवी जो नौसेना थी वो सब उस समय की सबसे अच्छी नौसेना थी. He also occupied Sri Lanka's northern parts. और उन्होंने श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट था उसको भी कैप्चर किया था. He also defeated the Chalukyas in the Deccan. और डेक्कन प्लेट्यू में डेक्कन रीजन में उन्होंने चालुक्यास को भी डिफीट किया था, हराया था. He sent his naval forces to conquer the Maldives Islands successfully. The beautiful temple of Brihadashvara in Tanjavir in Tamil Nadu was constructed by him, Rajendra Chola. After the death of Rajaraja first, his son Rajendra Chola occupied the throne. He continued with the policy of conquest. उन्होंने विजय का अभियान जारी रखा. The empire became more powerful in the period of Rajendra Chola. और राजेंद्र चोला के शासनकाल में उनकी जो एम्पायर थी वो बहुत ही शक्तिशाली हो गई थी. He completed the conquest of Sri Lanka that his father had started. His army defeated the Cheras and the Chalukyas
and then marched towards northeast, now modern day West Bengal, where he defeated the Palas. His army even reached Myanmar. People regard Rajendra Chola as Gangokonda Chola or the conqueror of Ganga. Gang, Gangekonda Cholapuram. The word Gangekonda Cholapuram is formed from four words, which, when read backwards, means the city Puram of the Cholas, to which was brought the river Ganga. It is believed that Rajendra Chola filled the entire temple tank with water from the Ganga. Rajendra Chola laid the foundation of a new city, Gangakonda Cholapuram, and a special coronation ceremony was held to celebrate the honor of his victory. Rajendra Chola's most adventurous campaign was in Southeast Asia. For trade, Indian ships had to travel through the Straits of Malacca, which was under the control of the kingdom of Sri Vijaya. The merchants were greatly affected by this. They appealed to Rajendra Chola for aid. Rajendra Chola sent a large fleet against Sri Vijaya, who was defeated by the Chola navy. The trade was resumed once again, and the Chola dynasty flourished as a result of it. The successor of Rajendra Chola continued to fight against the neighboring kingdoms, but as it always happens, continuous wars need resources and wealth to carry on. Continuous war जहाँ पर होता है वहाँ पर resources और weapons के लिए पैसे वगैरह मनी सब wealth भी खराब होती है तो वो सारी चीजें लगातार चाहिए. The Chola treasury adversely. The huge expenses on wars affected the Chola treasury adversely. और जो विपन्स की ज्यादा विपन्स की जरूरत हुई तो उससे जो है चोला की जो ट्रेजरी थी खजाना था उस पर भी असर पड़ा. दिस वीकेंड द चोला एम्पायर. उसने चोला एम्पायर को वीक कर दिया. Towards the end of the 13th century, the Chola Empire declined. और 13th century के end में चोला एम्पायर डिक्लाइन हुआ, नष्ट होना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूस वॉर करते थे तो सोल्जर्स पे भी खर्च होगा, वेपन्स पे भी खर्च होगा और जब वार होगा तो बहुत सारी चीजें डैमेज होगी. चोला ट्रेड. अब चोला का ट्रेड कैसा था चोला डायनेसिटी का वो देखते हैं. द ट्रेडर्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड डोमिनेटेड ट्रेड. देयर वर टू चीफ पोर्ट्स, कावेरीपट्टनम एंड नागापट्टिनम. दो पोर्ट थे क्योंकि जो है उनका सी रूट था तो वहां पर टू पोर्ट्स उनके इम्पोर्टेंट थे. कौन कौन से? कावेरीपट्टनम एंड Nagapattinam. Merchants arrived there from Southeast Asia and China. Southeast Asia और चाइना से मर्चेंट्स यहाँ पर व्यापारी यहाँ पर आते थे. Evidence proves that even Yavanas Greeks visited the city in order to trade. एविडेंस बताते हैं कि ग्रीक लोग भी यहाँ पर ट्रेड के लिए व्यापार के लिए आते थे. Trade guilds were established. The profits from trade were used for the development of agriculture. Cholas carried on trade with China also. Cultural achievements of the Cholas. अब इनका cultural achievements क्या है वो हम देखते हैं. Temples. The temples built by the Cholas are spectacular examples of architectural and sculptural marvels. The famous temples of Tanjavir and Gangakonda Cholapuram were built by Rajaraja and Rajendra Chola. Chola temples were the centers of cultural activities. Settlements developed around the Chola temples. Carnatic style of music was originally sung in the temple
halls. Inscriptions inform us about hospitals near the temples. These inscriptions also give us a list of the medicines maintained in the hospitals. Temples were the meeting places for people. They also discussed their local issues in the temples. और जो टेम्पल वहां पर बनाए गए थे वहां पर लोकल पीपल मीटिंग करते थे और वो वहां पर जो लोकल इश्यूज होते थे बातें होती थी वो वहां पर होती थी. बृहदेश्वर टेम्पल, सी दिस पिक्चर, टेम्पल इज गिवन, ये बृहदेश्वर टेम्पल है. वंडरफुल टू नो, Bharatnatyam is a form of Indian classical dance. It was performed by trained dancers in South India temples. Sculptures. The most distinctive feature of Chola craft was making bronze images. ब्रॉन्ज की इमेजेस जो बनाते थे, ये देखिए, ये ब्रॉन्ज की इमेजेस जो बनती थी, मूर्तियां जो बनती थी, वो बहुत फेमस थी. These bronze images of the Cholas are considered amongst the finest in the world. Most of the bronze sculptures were of deities. A few sculptures of devotees were also found. Bronze statue of नटराजा, ये देखिए ब्रॉन्ज स्टेचू है, नटराजा की ब्रॉन्ज स्टेचू यहाँ पर दी हुई है. सी ऑन पेज नंबर 21. Wonderful to know, Nataraja image of Lord Shiva as Lord of Dance. लॉर्ड शिवा का डांस करते हुए ये इमेज है. इज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन ऑफ चोला आर्ट. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. अब देखिए यहाँ पर किस तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी, लिखी जाती थी, वो देखते हैं. मेनी रीजनल लैंग्वेजेस लाइक तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस पीरियड में तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज डेवलप हुई. An important literary achievement was that famous literary works were translated into these regional languages during this time. Chola inscriptions are sources that give us information about their conquest, land grants, village government, important posts and officials. ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. They also tell us about the system of revenue evaluation and collection. कि रेवेन्यू किस तरह से लिया जाएगा उसका भी यहाँ पर वर्णन किया गया है. Copper plate inscriptions of the Cholas are a very unique feature as they were used for writing about the system of evolution, the events, conquest, people and land grants. Copper plate बहुत ही important इनका वो है कि जिस पर ये सब लिखते थे. Inscriptions are also found on the stone walls of the temples. और जो स्टोन वॉल्स है टेम्पल्स की, उसके भी ऊपर भी वह इंफॉर्मेशन जो भी लिखते थे, स्क्रिप्ट्स, वो सब लिखा हुआ होता था. They are found at other places too. A large number of inscriptions are found on the walls of the बृहदेश्वर टेम्पल. और जो बृहदेश्वर टेम्पल है उसकी भी वॉल पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई है. Administration. The king was the most powerful person but was expected to take advice of either his council of ministers or his पुरोहित. एम्परर जो सम्राट था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पर्सन था, लेकिन वो अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे, परिषद थी, मंत्री परिषद, उनसे सलाह लेते थे या फिर पुरोहित से सलाह लेते थे. The administration was also looked after by assemblies at the town and village level. Village level पे और town level पे जो ministers थे वो भी administration को देखते थे, वो भी वहां पर भी देखा जाता था. For easy and efficient administration, the Chola Empire was divided into provinces called mandalams. Mandalams were further divided into valandas or districts. Groups of villages formed larger units called nadus. The king appointed
governors to look after the mandalams. There, there were many towns also. The towns were known as nagarams. A large town was called Tanur. The governors were from the royal family. गवर्नर्स कहाँ कहाँ से थे? रॉयल फैमिली से ही थे. The associations or assemblies were the most important part of Chola administration. They performed the role of the local self-government of modern times. The and the Sabha were the two important assemblies involved in local self-government in the rural areas. The was like a general assembly of people who were the owners of land in the village. The members of and Sabha had to have administrative experience, be honest, and submit their own and family members' accounts fairly before contesting assembly elections. The function of the Sabha are described in Parantaka inscription, which says that it operated through committees that looked after different aspects of local administration like temples, gardens, land, revenue, and law and order. During this period, trade and commerce was at the peak. इस समय पर ट्रेड और कॉमर्स दोनों पीक पर थे. चोला inscriptions mention about large trading corporation named manigrams. These manigrams operated in inland towns as well as in coastal areas. एग्रीकल्चर. अब यहाँ का एग्रीकल्चर कैसा था वो देखते हैं. चोलास मेड न्यू डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर. इन्होंने एग्रीकल्चर में भी न्यू ट्रेड डेवलप किया. दे ओपनड अप एरियाज फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन. लार्ज स्केल पे कल्टीवेट किए फार्म्स को. दे ऑल्सो लेवल्ड लैंड एंड क्लियर्ड द फॉरेस्ट. इन्होंने लेवल किया लैंड का और फॉरेस्ट को क्लियर किया. Cholas learned and introduced the art of growing 2 crops in a year. और उन्होंने ये किया कि साल में 2 क्रॉप तो होनी ही चाहिए. They excelled in the cultivation of rice. और राइस चावल का कल्टीवेट किया इन्होंने खेती. Irrigation. Cholas had a well organized irrigation system. The branches of Kaveri river were divided into several small channels and that deposited fertile alluvial on the banks. इन्होंने क्या किया? कावेरी रिवर को इस तरह से डिवाइड किया कैनाल्स के थ्रू कि वो उनको इरिगेट हो सके. This technique resulted in making the land fertile. इस टेक्निक ने उनकी जो लैंड थी उसको फर्टाइल करना शुरू कर दिया. मिट्टी को सॉइल को फर्टाइल करना शुरू कर दिया. एंड एज ए रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग गुड क्रॉप. और जब सॉइल फर्टाइल होती है तो क्या होता है? गुड क्रॉप्स मिलती है. टू प्रिवेंट फ्लडिंग, embankments were constructed in the delta region. Cholas also constructed canals to carry water to the fields. Method of artificial water cropping were used. Artificial water का भी इन्होंने किया कि किस तरह से क्रॉप में वो आर्टिफिशियल वाटर दिया जाए. इन सम एरियाज वेल्स वर डग. और उसके लिए कुछ एरिया में वेल्स बनाए गए जिससे कि पानी निकाला जा सके. ह्यूज टैंक्स वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर. और बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए जिसमें कि रेन वाटर कलेक्ट किया जाता था. पीपल टुक एक्टिव इंटरेस्ट इन ऑल द डेवलपमेंट वर्क्स. और लोगों ने भी इसमें बहुत रुचि ली कि हम इस तरह से करके और अपने गांव का, अपने टाउन का, अपने किंगडम का विकास कर सकते हैं. A great dam across the Kaveri river made Tanjavir the capital, the granary of the south. The Chola temples were very rich. Chola temples were very rich, hence they took the initiative to invest in agriculture.
They gave economic support to bring barren lands under cultivation and also for irrigation. Even the king gave away lands in dry areas which could be developed for agriculture. The Chola period is regarded as one of the most spectacular and remarkable periods in Indian history. The reason was that it exhibited all round developments and prosperity. Their achievements in the field of culture, warfare, and agriculture will be remembered through the ages. चोला डायनेसिटी में चोला पीरियड में क्या था कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो वर्ड्स थे आसपास के राज्यों को मिला करके और उनको अपना एक कैपिटल किंगडम अपनी किंगडम को बड़ा कर दिया तो ये बहुत पावरफुल किंगडम बन गई थी. ओके चिल्ड्रन, द लेसन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ आई विल सेंड क्वेश्चन आंसर्स टू यू. ओके, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, बाय.